अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3, फाइंड v when r is equal to 6 and find r when v is equal to 320. So students, what will we do? सिंपली हमारे पास रिलेशन गिवन है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, कांस्टेंट लगाया, v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब। सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इज इक्वल टू v r क्यूब। v की वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू r की वैल्यू गिवन है 3 क्यूब। सो 5 इंटू 3 क्यूब 27। सो k इज इक्वल टू 135। सो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट इज के find the value of v when r is equal to this. So we put the value of k in this, we get v is equal to 135 over r cube. हमने v फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा 35। r कितना गिवन हमें 6 क्यूब। सो v is equal to 135 over 6 cube is equal to 216. So v is equal to 5/8. So v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। पार्ट 1 भी हो चुका हमारा कंप्लीट। Second part is find value of r when v is equal to this. So we again use this relation, v is equal to 135 over r cube. We have to find the value of r, so we separate this. R cube is equal to 135 by v. So v is given 320, so 135 over 320. So r cube is equal to 135 over 320, which is equal to 27 by 64. So we want only r value, not r cube, so we take cube root on both sides. So we get r is equal to 3/4. So second part is also done. We have to find the value of r. So ये क्वेश्चन आज का हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.